सर मतलब ये क्या मतलब क्या ग्रुप है, ये कुछ नया स्टार्ट हुआ एकदम सीरीज ऑफ लेक्चर्स? हाँ, ये IIC है, ये इंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में सेंटर हमारा ना, इनोवेशन सेंटर है, उसके अंडर में है। सीपी मैम हमारे डायरेक्टर हैं और सी डायनामिक डायरेक्टर एंड वर्किंग हार्ड टू एक्सेल दिस सेंटर. So this is the government initiative to motivate the people to do the innovative work. ओके सर, तो इसमें जी बोलिए मैम. वगैरह हैं कुछ है? तो सेंटर कुछ कोर्स वगैरह कराती है क्या? कोर्स के भी प्लान में है, कोर्स भी हम लोग कराएंगे कुछ ऐसे यूनिक कोर्स. अभी लेक्चर चल रहा है, लेक्चर बहुत सारे जो नॉलेज है देना, जैसे स्टार्टअप कैसे करना है आपको, IPR पे लेक्चर होगा कि आप पैकेट कैसे करेंगे, होगा. फिर आपको मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, इस चीज पे भी होगा. तो काफी चीजों को मार्केटिंग कैसे करते हैं आप, तो काफी लेक्चर हुआ इस पे. प्रोसेस डेवलपमेंट पे भी हुआ. तो इससे भी चल रहा, जिसमें कि जस्ट इंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेशन काम कैसे करेंगे, इसके लिए सब डेवलप किया जा रहा है. अच्छा अच्छा. ताकि अब तो ये कॉलेज और मतलब कहाँ पे लोकेटेड है सेंटर? हैं? सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? ये सेंटर है मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग कॉलेज में, और एक कंप्यूटर साइंस के बगल में है, 2 जगह इसका प्लेस है. अच्छा अच्छा. ऑफिस वही कभी विजिट करना? सिमी मैम, प्रोफेसर फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट. अच्छा. She is right now director and working hard to excel the center. And जब से आई है मैम काफी प्रोग्राम्स करा दिए हैं इन्होंने, काफी आगे बढ़ रहा सेंटर हमारा. सर जी सूरज भाई. सर मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं. जैसे आते कब तक आने का है उनका? सर कुछ नहीं कह सकते, कोई जवाब भी नहीं है उनका अभी. अच्छा, जैसे आएंगे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, आएंगे तो छोड़ दीजिएगा प्लीज सर. आप फिलहाल एंगेज तो मैं कुछ शेयर करता हूं इन लोगों से. ये प्लीज सर. थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम. स्क्रीन दिख रहा है? सर विजिबल है? यस सर. So let us see entrepreneurship ecosystem that is evaluating its effectiveness. So we'll discuss today various elements of entrepreneur ecosystems. Then we'll see why has the success rate been so low. In the case of entrepreneur, the success rate is very low. We'll see why, what is the reason behind it, that the entrepreneurship is not growing in fast mode, it is growing in very slow mode. And what is the needed to build a stronger system. System is also play very important role in the startup and entrepreneurship. A world-class solutions that will increase capacity to serve the entrepreneur community. So we'll discuss these all. So let us see the elements of entrepreneur ecosystem. These all are the elements, and there is a global internship index, GEI. So according to GEI, 160 countries, 24K partners, and 1 ecosystem. So entrepreneurs, then the education system, market structure, infrastructure, research and development system, financial sector, corporate sector, and the government sector. These all are the elements of ecosystem. Now let us see here, GI building blocks. What are the building blocks? Entrepreneur attitudes, opportunity perceptions, startup skills,
risk acceptance, networking, cultural support. So, my dear friend, if you want to be an entrepreneur, so there should be good attitudes. There should be opportunity perceptions. एंड अगर आपके पास स्टार्टअप स्किल्स नहीं है, यू विल नॉट गेट सक्सेस. कभी भी सक्सेस के लिए आपका स्किल्स होना जरूरी है. मान लीजिए आपको किसी मशीन को ऑन करने आ गया और बंद करने नहीं आता, दैट मीन्स यू आर नॉट स्किल्ड. सो skills play important role in the entrepreneur. So you should have the startup skills and risk acceptance. आप में एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर रिस्क हो रहा है, आपको नुकसान भी हो सकता है, तो you should have ability to face the risk anytime. Any risk may be. सपोज कीजिए आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया और टोटली लॉस हो. कई दफा क्या होता है कि बिजनेस में, स्टार्टअप में ग्रो भी कर जाते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. You should have various connections, contact by which you can promote, convince about your product to the other people. And you have to impress the people with your skills and your product. एक बात बताऊं, मैं जब एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था विप्रो में, वहां पे सिचुएशंस क्या कि जस्ट यू आर गोइंग टू टेक द प्रोजेक्ट फ्रॉम योर क्लाइंट. सो क्लाइंट कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ योर एक्सपर्ट एम्प्लॉय हु इज गोइंग टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट. So skills is very important, networking is also very important, and the cultural support. This should be the attitude for the entrepreneur attitude. And second building blocks, that is the entrepreneur abilities, opportunity to startup. कभी कभी क्या होता है, मैं अभी देखा काफी बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद कि बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है फॉर द स्टार्टअप. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपके पास आइडियाज है, कर सकते हैं, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है. हाँ, अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट है, स्टार्टअप आइडियाज हैं, आपको काम करने वाले लोग मिल जाए, यानी कि अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then the technology absorptions, human capitals and the competitions. So ये सारे आपको मार्केट में जब कोचिंग निकाल रहे हैं, तो मार्केट को आपको देखना भी होगा कि मार्केट में यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, वेदर हु इज द कंपटीटर. कि एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, उसी को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको देखना है कोई ना कोई यूनिकनेस होना चाहिए, या मार्केट स्ट्रेटजी बनाएंगे आप. यहाँ पे एक कोट याद आ रहा है, ए पर्सन हु इज सक्सेस दैट नो ए यूनिक थिंग्स दैट इज नॉट नोन बाय द अदर पीपल. एक कोई ऐसा क्वालिटी है जो आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता, देन यू विल बी सक्सेस इन द मार्केट. यू हैव टू compete the people. There is a lot of competition in the market. That all you have to keep in your mind, that come under the entrepreneurial abilities. Next, entrepreneurial aspirations, product innovation. Product should be innovative. Process innovations. Your product should be innovative, that look different from other. And making process is also important. If there is innovations in your process, that will be good. And high growth is very important. That means
product growth is important and internationalized और that should be accepted worldwide. अगर आपने कोई लोकल प्रोडक्ट बनाया, लोकल चल रहा है, फिर वो सक्सेस नहीं है. आपको उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है कि इन अदर कंट्री पीपल कैन लाइक दे accept your product. And there is a risk of a capital. Risk capital also come under the entrepreneur aspirations. Now, there is a benchmark. Everywhere you have to see the benchmark. Individuals who recognize valuable business opportunities. The benchmark, individual who recognize valuable business opportunity. जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू हो, जिसको लोग रिकॉग्निशन दें. Second one, have to the skill to exploit them. You should have skills and you have to exploit it. Also attach high status to the entrepreneurs, can bear and handle a startup risk. You have to, if there is any problems, you have to bear and handle the risk. When you are going to start any business, there may be a risk. That business may be grow, may be flop. So there is a risk. No other entrepreneur personally. Now you have to look into the life of a entrepreneur personally, how they grow. इंसान को कभी कभी दूसरों को देखकर मोटिवेशन मिलता है. तो अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसको आप पर्सनली अगर जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया, क्या टेक्निक्स किया, कैसे किया, कितना आगे बढ़ गया. And can generate future entrepreneurial activities. You have to generate the entrepreneurial activities for the future. These all are the benchmarks. Startups that are in the medium high technology sectors are initiated by educated entrepreneurs, offer a unique product or a service, operate in an environment that is not overly competitive. Now यहाँ पे आपको understand करना है कि when you are going to start the startup, तो आपको देखना होगा कि when you are going to develop a technology or a product, are in the medium or the high technology sector. और ये भी देखना है कि क्या ये स्टार्टअप इनिशिएटेड बाय ये एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर. कभी कभी क्या होता है कि अनएजुकेटेड पीपल, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. उनके पास आइडिया होता है, वो एजुकेटेड पीपल को लेकर आते हैं. एंड एक एजुकेटेड पीपल थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. They see every aspect when you are educated. You know the pros and cons. And offer a unique product or a service. Just you have to make the uniqueness in the product, uniqueness in the service, and operate in an environment that is not overly competitive. अब उसको आप ऐसा हाईली कॉम्पिटिटिव प्लेस पर अगर उसको ऑपरेट करते हैं तो सक्सेस नहीं होगा. तो आपको देखना होगा कि जहां पे कम कंपटीशन है, अगर कोई प्रोडक्ट को सक्सेस कराना है, तो इनोवेशन का मतलब क्या है कि आपके पास किसी चीज की जो जिस सोसाइटी में रहते हैं और पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम फेस बाय द वेरियस पीपल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन एंड यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम. If you are developing the product that will excel in the market, कम से कम उस एरिया में तो प्रोडक्ट चल जाएगा. From there you started your business. So there definitely if people are facing the problems and you are giving the solutions, then that product will be excel in the market and grow, and slowly you can also move to the other market where such type of problem already solved.
If you are residing in the area where low income people are residing and solutions of that problem is economical, so the people residing in the local area, low income area will not survive. So you have to think over it. If we have to develop low cost product, and that will be very popular because there is no competitions of that product in that area. So that is also under the benchmark. And the early stage entrepreneur effort too means introduce new product or services. Now you have to develop the new product or new service. Either you are going to work in the field of service industries or the product industries. In the service industry, many people are giving the services. If you are going to give the better services, for an example, service oriented. Suppose in the Jamia, there is a guard. गार्ड का सर्विस लेते हैं, आप एक कंपनी है उसको हायर करते हैं, उस कंपनी से आप सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को. So that is also the business. You have collected the poor people, they don't have any job, and you make a company getting the product, I will do these services, otherwise outsourcing people. So that is the service industries, or you are, so in that case, low income is required for you. Just you have to arrange the salary for the people. So you are giving the services to the people. If you are going to introduce a new product, that in making the product, initial cost is required to develop the new product. And there is a risk whether this product will be survive in the market or not. If survived, then it's good. Another, develop a new production process. You have an idea, and there is a traditional production system. And if you are going to change the production system by introducing the innovations in the production system, that will be good. Penetrate a foreign market, and you have to penetrate in the foreign market. Substantially increase their company staff. कभी कभी आपने सुना होगा एक कंपनी एक इंसान था, उसने 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को, फिर आहिस्ते आहिस्ते staff in that company increased day by day. Then one company in Delhi, after some time that company grow and open the branch in Bombay and Kolkata, etc. So you can start from the beginning and you can reach on the top. So you have to increase the company staff slowly. If you have a income 10,000 and you are spending 20,000 on the staff, so definitely your business will flop. That means if you are earning 20,000, that means 5,000 you have to accommodate your employee. Any students, after completing the course, join the company. They are getting salary 20,000, 40,000, 80,000. Do you know why he is getting 40,000, another 30,000 and 60,000? If the person earning the money 1 lakh, so out of 1 lakh, the company can give happily 60,000. If you are giving company 60,000, they can give you the 20,000 happily. So you have to estimate the cost, whether the staff are required or not. So you can increase the staff substantially. Finance their business with formal and informal venture capital. This is also, finance is very important. Their business with formal and informal venture. Just I'm giving a entrepreneur of the Canada. Entrepreneurship attitudes, opportunity, they score 1. Startup skills, 0.67. Risk acceptance, 0.8. Networking, 0.7. And cultural support. So first you have to calculate the score for the attitudes,
when you want to become the entrepreneur. And the abilities of you start 0.80, technology absorptions 0.68, human capital 0.98, and competitions 80. Inspirations, as I told you, in the ecosystem and the elements, product innovations 0.65 and process innovations 0.73. So you have to consider these all and you have to calculate. Then you can take the decision. Global Entrepreneur Index, let us see rank. The rank 1, United States, that Global Entrepreneurship Index is 86.2. In Canada, 79.5. Australia, 78.0. Denmark, 76.0. Sweden, 75.9. Taiwan, 69.7. Iceland, 68.9. Switzerland, and the France. So this is the global. Your business should be accepted globally. Now, in 2016, Global Entrepreneurship Index was 52%, and GIS scores quantities, top quartile 53.5 to 86.2, and second quartile 38.5 to 53.4, and third quartile 8.9 to 37.7, and the bottom quartile 9.9 to 2.1. This is the global scenario. And why the success rate been so low? Why has the success rate been so low in the entrepreneurship? As for my opinion, the people are not taking care of each and every component. Some people started their business and their idea is not good, and after the production, that product is failed. Somehow idea is good. When you started the production, you have no capital, no money, so there you will fail. Sometimes technology you are using in the beginning it's good, but after some times it is not good. So there are various factors that you have to consider to grow. आप देखते हैं कभी कभी मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है और 2-4 दिन चलता है और फेल हो जाता है. चलिए उसके एग्जांपल में छोड़िए, फिल्म का एग्जांपल लेता हूं. एवरीवन वाचिंग द मूवी, एक मूवी में करोड़ों रुपया खर्च हुआ और वो मूवी सक्सेस नहीं हुई, चली नहीं. 1-2 बार, एक आध हफ्ते चली नहीं, और एक आध मूवी 100 month 2 month तक चलती रही. So there are certain things. What is the demand of the people? People क्या चाह रहे हैं? According to them, that product is suitable, then that will be the success. So entrepreneurs में स्टार्टअप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसे अगर उसको सर्वाइव किया, रिस्क है, तो यू ग्रो. What is the needed to build a stronger system? You have to make the stronger system. अगर आपने सिस्टम बनाया काम करने के लिए और सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट अगर वीक हो गया तो सक्सेस नहीं होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. You all are a student and some students are doing research and the PhD. One students are doing good, writing the good research paper, and other are not. So that is also the system. Department, there is an infrastructure, supervisor, and the teacher. So there is a major 3 component: supervisor, a student, and the infrastructure. If any one component is weak, supervisor is good, a student is good, but infrastructure is not available, so that idea will not be implemented. So there is a failure. That means you have to make the infrastructure strong. If infrastructure is strong
and a student is not hard working, just they are time passing, not working hard, just either the ghumna, then system will fail, system is not strong. If a student is hard working and try their level best to do the good work, similarly, supervisor also play important role. Supervisor is not giving time, not handling the properly, so that system is not good. So you have to focus on each and every component of your company. In your company, employee, infrastructure, and the product. So you have to take care of each and every component of your company, then you will be the successful man or woman in the world. You have to take care of the employee, whether the employee are giving the full time, working with the dedications or not, or working for only getting the salary. Another thing, when the product is coming, whether the quality of the product is good or not. So each and every component you have to take care to build it strong. Product development process, when you have some idea and you are going to develop the product. So idea generation is very important. Second, market research analysis. That means your product will be survive in the market or not. So you have to do some analysis. That's why a concept of big data analytics is emerges in the real life, the real world. And people are using that concept, analysis concept, to do the research in the market, whether your product will be successful or not. If your product is launching in the area where the people demanding that product, then that will be successful. And if you develop a product that is not liked by the people, then that will fail. Design and development also very important. You have to think the process, a new idea to design the product and develop it. After that, you have to take care of testing also and commercialize. Testing means validations, validate whether this is working or not, and then think for the commercialize, sell in the market by looking at the each and every parameter. The best company develop and implement a systematic process of new product development and best practice. The best company develop and implement a systematic process of new product. You have to make a system from developing, starting to the implementations. And from starting to implementations, you will face a lot of problems. And you should have some solutions if a problem arises there. Best management practice in MPD, climate and the culture is also very important. फ्रेंड, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी आप नोटिस कीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी वगैरह बनते हैं मलेशिया से आते हैं, इंडिया में प्रोडक्शन कम है, क्योंकि कभी कोई इतनी बारीक होता है कि उसके जो क्लाइमेट की वजह से वो आपका सक्सेस नहीं होगा. अगर आपने मदरबोर्ड ही बनाना चाहा, 10 मदरबोर्ड बनाएंगे तो 2 सक्सेस होगा और 5 बेकार हो जाएगा. तो क्लाइमेट एंड द कल्चर आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं या और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि क्या दिस इन्वायरमेंट इट विल बी सक्सेस और नॉट. That is very important. So open communications among employees across function or the locations. Support entrepreneur and the innovations. Product champion recognized and rewarded. So team recognized and the rewarded. No punishment for the product failure. अब कोई काम कर रहा है और करते वो फेल हो गया, तो क्या आप उसको पनिशमेंट देंगे? उसकी क्या गलती है? प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है. हम कभी कभी रिसर्च पेपर भेजते हैं, वो वापस आ जाता है, so that is the failure. So there is no punishment. You have to search answers. It is failure. It is fail. But why? What is the reason behind the failure? You have to think from beginning and try to develop the things
and one day will come, will be success. Employee understand the process, idea to launch. Business climate is not the risk reverse. Best management, action and program to promote positive climate. Means the new product idea, services, rewarded or recognized. New product idea suggestion scheme in the place. Resources available for the creative work. When you want to do some creative work, whether that resources are available or not. हम कुछ ऐसा काम करना चाहते, आइडियाज है, बट उसका रिसोर्सेज ही नहीं. And time off for the creative work. Unofficial project encouraged. Senior management practice role and the commitment to NPD. Management is very important in a company to manage the business, and role and the commitment. Leave day-to-day activities, decision to protect the team. Strongly committed for the company. Involved in go and no-go decision. Provide a strong support and empowerment to team member. Understand process from idea to launch. Help design and shape the process. Measure overall result. That is part of annual object. Project team, what are the various characteristics of the project team? The first characteristics, identifiable project team leader. Team leader play a very important role. If your team leader is not strong, they will not lead in the good way. Team leader should be strong in all aspects. They should have technical knowledge or other knowledge, general knowledge, dedicated, and having the idea to manage the people. Assign the team of players. आपने देखा है, टीम अगर हमने गेम खेलते हैं, गेम में एक प्लेयर, कई प्लेयर्स होते हैं, उसमें से एक कैप्टन होता है जो सारे प्लेयर को मैनेज करता है. डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं. अगर टीम प्लेयर्स, कैप्टन of the team is good, then that team will perform good because they have to take the decision and everyone to accept it. Team together from beginning to end of the project. उस टीम में आपको जो बिगिनिंग में रखा है, एंड तक रखिए. पता चला बीच में ही कुछ लोग छोड़ कर चले गए तो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो जो नया आदमी आएगा उसको प्रोजेक्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो टाइम बहुत लग जाएगा. कर तो लेगा लेकिन टाइम लगेगा. तो आपके जो एफिशिएंसी थी, गुडनेस था प्रोजेक्ट के लिए, टाइम फ्रेम था, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी. लीडर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड प्रोजेक्ट. टीम इन इज क्रॉस फंक्शनल एंड कोऑपरेटिव. All members should cooperate to each other and the functionals. Information shares among the members. Team is accountable for the project and result. Decision made outside the team are efficient. A strategy defined role of NPD in the business goal, long-term commitment. Clearly define the NPD goal, a strategic bucket or resource roadmap in place. Another thing is very important, that is portfolio management. Is very important. So project aligned with the business strategy. Your project should be always aligned with the business strategy. You have a business strategy, so that you should be aligned. Resource breakdown reflect the business strategy. If in some cases your resources are breakdown, then that will reflect the business strategy. Rank and priorities of the project. Good balance in number of project and the resources is very important. If you have project and less resources, it will not good. You have to make the balance between the project and resources required in the project. Portfolio include high value to the business project, and the portfolio has excellent balance in the type of project, formal and systematic portfolio management process. The another thing, that is the resource ability, have a sufficient sales force people and time, R&D technical people and time, manufacturing operations time, marketing people and the time. Project team focus and dedicated resources.
resources allocated based on the project merit. And innovations team should exist. Team is focused, not doing too much overwork. Team is focused and not spread over the too many projects. Adequate resources are assigned to the project. So performance drivers are also very important that distinguish high performing from low performing. So you have to do the systematic process, and also you have to take care of quality of executions. If the quality of executions, then you'll be success. Other best practice built into the NPD process, speeding up the front homework, voice of customer information, quality of market information, and entertaining development, sharp early product, and defining competitive and the advantages. Now let us see some popular metrics. Performance of the program, percentage of sale revenue from the new product, percentage of growth sales from the new product, performance of product, profitability, revenue versus forecasted revenue, customer satisfaction. So these all are the very important metrics. Whether you are getting the profit from your product or not, you have to also forecast the revenue versus the forecast revenue. And customer satisfaction is very important. If customer is satisfied with your product, then your product will be popular. If customer is not satisfied with your product will not be successful. Performance management, continuous improvement. So process, resource management, governance, leadership, planning, customer, employee, work process, supplier, and the partners. So this is the very important in the business. A study in United States compared the benefit received by award winner from 2007 to 2010 with the cost of operating the program and reported benefit to the cost ratio. This one. So see, how can you calculate? You invested and got the money, what amount of return you got? It's very important. So due to lack of time is over. So I'm stopping here. Just going from the slide and so many here. थैंक यू मनसाफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. Any question from the audience participant? If you have any question, feel free to ask. Or you can discuss anything related to it. Any question? No, sir. But your presentation was very good, sir. Thank you very much. So how is the market research done? Yeah. So how is the market research done? Okay. To research the market. Yes, sir. Suppose you want to, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. एक मालब्रो सिगरेट है, उसको बटला हाउस में लाकर रख देंगे, एक भी नहीं बिकेगा. और आज ये बटला हाउस ओखला एरिया में आप ढूंढेंगे तो कहीं वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. लेकिन यहीं से थोड़े ही दूर पे आप कम्युनिटी सेंटर पर चले जाइए, तो कम्युनिटी सेंटर पे वो मालब्रो सिगरेट मिल जाएगी. क्योंकि आपको सर्वे करना होगा कि what type of people, what type of product they like. So there you can, some people focusing on the cost, not caring the quantity. Some people are not so rich, so they survive in the economical product. So first you have to collect the data, do the analytics, and then according to the result of analytics, you have to launch the product. Right now आपने देखा होगा कि रेटिंग भी जाती है. कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो हर प्रोडक्ट का रेटिंग होता है. रेटिंग को अमेज़न पे ये जाइए तो रेटिंग है, तो उससे भी एनालिसिस किया जाता है कि इसका रेटिंग अच्छा है तो दूसरा जो कस्टमर है वो फौरन उसको खरीद लेता है, कमेंट आता है. तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है,
पब्लिक किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड में है, फिर अगर उसके माइंड के एक सेट के अकॉर्डिंग लाए प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। रेयान साहब, Yes, sir. you got it? Yes, sir. Any more? Feel free to discuss. We all are human being, and everyone have some ideas, and you can discuss, and we can develop something, some solution for the societal problem. You people are very energetic, and you can do. Nothing is impossible in the world. If you try, you can develop. Maybe difficulty will come. You have to face the difficulty, and after facing the difficulty, a day will come when you will be success. Any more things you want to discuss? सर मेरे भाई ने एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी कंपनी को कोई कपड़ा सेल करना है या फिर कोई कपड़ा बनाना है तो उस पे वो रिसर्च कैसे करेगी कि ये सर्टेन कम्युनिटी को ऐसे ही कपड़े चाहिए। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक शर्ट है, आप शॉपर स्टॉप पे जाइएगा, आप खरीदिएगा, ओके? प्राइस 4,000। आप उसको लाकर एक ठेला पे लगाकर आप वहां पे बटला हाउस पे ठेला पर रख दीजिए उस शर्ट को, उसका लोग कीमत क्या लगाएंगे? क्या 4,000 बेच सकते हैं? नो सर, नहीं बेच सकते। उसका 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया है ना? यस सर। तो आप अपने प्रोडक्ट के, अभी पिछले क्लास में कोई सवाल आ रहा था कि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 रुपए के सामान को हम 100 रुपए में बेच देते हैं, तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन। यस सर, है ना? तो यू हैव टू थिंक ओवर इट कि हम देखते हैं ना, कभी कभी एक साइकोलॉजी की मेंटलिटी होगी कि अगर ठेले पे सामान है तो सस्ता ही होगा, और मॉल में अगर सस्ता भी सामान है, अगर टैग पे लगा दिया खुशी खुशी कोई ले लेगा, नहीं ये महंगा ही होगा। ब्रांड का भी आ जाता है। ब्रांड इज वेरी, आज के डेट में ना ब्रांड, आप सिर्फ आपने लोकल शर्ट लीजिए, देखिए लोकल शर्ट कहाँ बनता है? आसपास में ही बनता है जहां से आप अपना कपड़ा सिलवाते हैं। उसके बाद उस ब्रांड लगा देते हैं तो वो 100 रुपए का सामान 200 का हो जाता है। यस सर। तो ब्रांडिंग जो है ना, और ब्रांडिंग कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में, लेकिन ब्रांडिंग का कब होगा? थोड़ा सा क्वालिटी भी देना होगा आपको, बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया लगाना होगा, तो प्रोडक्ट विल बी सक्सेस। तो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में ब्रांडिंग के लिए आपको सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट टू मेक द ब्रांड। तो क्या आपने 10 चीज बनाया और क्वालिटी अच्छी हो गई तो एवरीवन लाइक, एंड दैट इज योर ओन ब्रांड। मान लीजिए रेयान साहब, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, रेयान प्रोडक्ट। रेयान प्रोडक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, उस नाम का है रेयान, और सोशल मीडिया पे एवरीवन आर गिविंग द थम्स, दैट्स गुड प्रोडक्ट। एट ए टाइम you will be the more popular in the whole world, so everyone requesting, I need the Rayan brand, okay? Yes sir. So strategy is also important. कहते हैं ना, फेना हमें भी देना, ऐड देखते हैं ना? Yes sir. तो इस तरह से हम पब्लिक को, मतलब कस्टमर्स को हम इम्प्रेस करते हैं towards your product. This is the strategy and the art. Yes sir. Any more questions, discussions? I think no question. No सर sir. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सेशन लेने के लिए। Thank you, Siraj साहब. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you sir. Thank you so much, Professor Mansaf Alam. I mean, it is amazing actually. मतलब आप इतना impromptu इतने अच्छे सेशन ले पाते, we are really really fortunate and lucky, Mansaf साहब, to have you with us, and मतलब it's really, I mean, I don't have words to express my gratitude. Thank you so much, ma'am. We are very very lucky. We are very very lucky in Jamia to have you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Dear participant, thank you very much for listening my talk with the patience. Thank you very much. It was amazing sir. Thank you, Rayan. Thank you sir. Thank you, Danish. Thank you, sir. Thank you, Sufyan. Thank you, Suhail.